Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 29th August. The session will be quite beneficial for you all, so stay tuned with us till the end, and it will be very important for all the students who are preparing for the competitive exam. The content that is provided here is in very refined way. We will be discussing multiple news here in this video, so stay tuned with us till the end. And if you are new here, do subscribe to us. We have one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relative, neighbors, and let them know about this interesting platform. One more thing students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning, so do watch these videos regularly. Also students, these sessions are very beneficial, so I want you all to like the video. That will motivate us to make better content for you in the long run. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs students, and in yesterday's video I have seen that multiple students were saying that sir, don't do revision in the middle of the video. But students, let me tell you, when we go through these one-liners in the middle of the video also, they are beneficial for you because it will help you to remember, and it will help us to cover more and more current affair topics, right? It will help us to revise the existing content and the previous content also. So these are quite important. Let's see that how this goes for a while, and then we'll change the pattern also. But don't worry, these questions, they are very beneficial. So moving on, let's start. First is Prime Minister Narendra Modi. This is Prime Minister Narendra Modi's third term as the Prime Minister of India, right? He visited to Gujarat from August 25th to 26th. And during his visit, he has inaugurated multiple projects. One such project is about railway, right? Various railway projects worth 1,400 crore rupees has been inaugurated. And it included the doubling of the 65 kilometer Mehsana Palanpur rail line that is worth 530 crore rupees. So it is one such thing. Then in the power sector, we are seeing that he inaugurated the power distribution projects worth 1,000 crore rupees. That is in Ahmedabad, Mehsana, Gandhinagar, right? And the aim here is basically to reduce the transmission losses and also to modernize the infrastructure there. Then another important thing that you need to remember is e-Vitara. He inaugurated this e-Vitara, that is the first made in India global battery energy electric vehicle of Maruti Suzuki. We all know Grand Vitara, right? And here this is the electric version of the Grand Vitara, that is e-Vitara has been inaugurated. Right? Take a note of this. Also, he also inaugurated the hybrid battery manufacturing plant, right? That the TDS lithium ion battery plant, that is a joint venture of Toshiba, Denso and Suzuki in Hansalpur of Gujarat, that will boost the domestic manufacturing. And also Asia's largest Maruti Suzuki plant is also being opened, where it is opening at Kharkhoda, that is in Haryana, right? Then apart from this, student, recently remember AI powered smart mosquito surveillance. AI powered smart mosquito surveillance in order to tackle with the mosquitoes, right? Andhra Pradesh, they have launched this AI powered smart mosquito surveillance. Then apart from this, Kala Setu, right? This Kala Setu, this challenge was launched that will boost the AI driven multilingual content creation in India. Then which edition of the India Maize Summit was inaugurated recently? So it is the 11th edition of the India Maize Summit, inaugurated by Shivraj Singh Chauhan. Then 7th edition of the Asia Pacific Regional Meet of International Solar Alliance was hosted by which country? Colombo. Next here you can see we talked about PM Modi. He visited here and multiple projects were launched. Next is we are talking about Fiji's Prime Minister, right? That is Fiji's Prime Minister Sitiveni, right? He visited India from 24th to 26th of August. And during his visit, we saw that he was here on the invitation of Prime Minister Narendra Modi, and he became the first ever official to visit India from Fiji, right? Then apart from this, here various meetings were done on that how can we control terrorism,
zero tolerance of terrorism was talked about here, right? Then multiple MOUs and a total of 9 MOUs were signed between them, that included in sectors such as agriculture sector, education sector, defense sector, healthcare sector, and your mobility sector, and many other. Also, ocean of peace, right? The focus here was on the vision, that is ocean of peace, right? The focus here is on building a peaceful, stable, and secure future for both the countries in the Pacific region. Take a note of this. Then apart from this, tell me, Trinidad and Tobago, it became the 8th country to have UPI. In PayPal world, UPI was included as a payment network, right? Then apart from this, Mukhyamantri Sarbat Sehat Bima Yojana. This scheme was launched by which state? It was launched by Punjab, right? And it offers 10 lakh rupees of universal cashless health insurance. Then next thing, tell me, a commemorative stamp was launched to mark the birth anniversary of Shama Prasad Mukherjee, right? It was the 125th birth anniversary of Shama Prasad Mukherjee. Then in order to launch a cyber security program, MEITY, this ministry partnered with which organization, or they signed an MOU with which institute? It is with BITS Pilani, right? They signed this MOU to launch cyber security program. Right, students? So these are the MOUs and these are the things on which it was talked about, and it was between India and Fiji. Next, Union Minister Dr. Jitendra Singh has launched India's first national biofoundry network, Bio E3 Challenge. So we are talking about two things here, right? Let's take them one by one. First, we are talking about National Biofoundry Network, right? This has been an initiative, and it is a network, and it is a strategic initiative that has been launched under the Bio E3 policy, and it comprises of 6 institutions, right? What is this first thing? Bio E3 Challenge. This Bio E3 Challenge is basically an initiative that is biotechnology for economy, environment, and employment. I repeat, biotechnology for economy, for environment, and employment, right? And this challenge has been specifically launched for the youth of India, right? This was at a National Media Center in New Delhi, and this initiative of the government of India is that how can we strengthen the biotechnology as a pillar of India's economic growth, right? This Bio E3 challenge, if we talk about, it is a nationwide drive with the theme design microbes, molecules, and more, right? Here you will be seeing that various solutions will be talked about in the health, agriculture, and environment sector, right? And various, it will be kind of a hackathon only, right, where problem statement is given and various teams will be working upon it, and here you will be seeing from each sector various startups will be chosen that will be giving the proper results here, and further they will be funded also here so that they can carry out their research and their project, right? So we are talking about the first anniversary of the Bio E3 policy launched by the Ministry of Science and Technology, and here initiative that is India's first national biofoundry network has been launched, Bio 3 E3 challenge, that we just discussed about, this hackathon type of thing. This was a challenge here, right? And here 6 institutions, these are the institutions that are part of this Bio E3 policy, right? And the theme here was design microbes, molecules, and more. Correct? Take a note of this, students. Then recently, tell me, students, IIFL Home Finance, they secured what amount of loan from AIIB, Asian Infrastructure Bank? It is your $100 million loan, right? And it is to fund the affordable housing in India. Next. Okay, before moving on, students, tell me which is the state that is leading in the potato production in India? Potato production. It is Gujarat state that is leading in the production of potato. One more thing, remember, Gujarat is also leading in the exports, right? That is the maximum exports from India is taking place from which state? It is Gujarat. So coming back, Gujarat has approved the restructuring, government has approved the restructuring and extension of PM Swanidhi scheme till 31st of August or 31st of March 2030, right? What is this PM Swanidhi scheme? This scheme is basically Prime Minister's Street Vendors Atmanirbhar Nidhi scheme, and it was been earlier it was till 31st of December 2024, and now it has been extended till 31st of March 2030. This is a central sector scheme, and it was launched when? It was launched on 1st of June in 2020. It was launched by
Ministry of Housing and Urban Affairs, and it is to providing the support to the street vendors, right? And who is the responsible ministry here? Ministry of Housing and Urban Affairs. Under this scheme, you will be seeing that various amount of money will be provided to these street vendors, right? So that they can meet their personal requirements, right? And these amount will be provided in various tranches, and the decision involves a budget of 7,332 crore rupees that will extend benefit to about 1.15 crore street vendors, including 50 lakh first time recipients. The first tranche has been increased to 15,000 rupees from earlier that was 10,000 rupees. The second tranche has been enhanced to 25,000 rupees that was earlier 20,000 rupees, and the third tranche remains the same of 50,000 rupees. Right, so here you can see the tranche amount: first 15,000, second 25, and third 50,000, that remained the same. Right, students, take a note of this. Next, okay, one more thing. Tell me, recently Tesla, they launched their first ever showroom in India. Where did they launch it? It was launched in Mumbai. Then another popped up in Sona, right, and in Delhi too. Then next thing, tell me, recently, if I ask you, world's first malaria drug for infants. Malaria drug for infants, that is for the babies, was launched by whom? It was launched by Switzerland, right? Then UNESCO, it removed 3 sites from the World Heritage list. So question can be asked, how many sites? Your homework is to tell me which are these sites and the location where they are located. I will be seeing how many students are commenting this, right? Moving on. Cabinet approvals for 27th of August. If we look at them, Union Cabinet, it is chaired by Prime Minister Narendra Modi, right? So these are the projects that are important. First is Railway Route 1 from Secunderabad to Wadi. The third and the fourth line will span across Karnataka and Telangana. Then second Railway Route from Bhagalpur to Jambalpur. Third line will be established in Bihar, and Railway Route 3. This include doubling of the Furkating New Tinsukia route in Assam, right? These are the routes that you need to remember here, correct? This is the first approval. These are the 4 projects that have been approved worth 12,328 crore rupees as proposed by the Ministry of Railways. Then apart from this, remember, Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved the proposal of the Ministry of Youth Affairs and Sport for the submission of India's bid to host the Commonwealth Games in 2030. So India is promoting this. India is pushing for hosting the Commonwealth Games in 2020, and Ahmedabad, Gujarat, the capital state of Gujarat, has been proposed as the host city for 2030 Commonwealth Games. Right, important students, take a note of both these things, right? First approval and second approval to host 2030 Commonwealth Games. Bid has been submitted by India, right? It is not final, but bid has been submitted by India. Then one more thing, remember, NSE, in the world, it ranks 4th at the 4th position in terms of the IPO fundraising, right? Then moving on, next is NHAI, that is your National Health Authority of India. They have launched Project Arohan to support the children of the toll plaza employees. I repeat, Project Arohan, launched by which organization? Launched by NHAI, and it is to support the children of the toll plaza employees. This is a scholarship scheme with an aim to support the higher education of the children of toll plaza employees with scholarships, mentorships, and skill building initiatives, right? And here, this first phase will be starting from July 2025 till March 2026. Next is DESW, that is your Department of Ex-Servicemen Welfare, that comes under the Ministry of Defense, has signed a memorandum of understanding with the Quality Council of India in New Delhi. This will improve the delivery of the pension, healthcare, resettlement and welfare services for over 63 lakh military veterans and their dependents, right? So this will be covering 63 lakh veterans. Focus here will be on providing pension, healthcare, resettlement, welfare and veteran entrepreneurship, right? Next, student, tell me who has been appointed as the President and Chief Executive Officer of the BMV. See, students, it is not BMW, but it is spelled as BMV, right? So for this, who has been appointed as the President and CEO? Hardeep Singh Brar, right? Then who became the first women
Chief Executive Officer and Managing Director of Hindustan Unilever Limited. Important question, as she became the first woman. So Priya Nair. Next, CDOT, that is Center for the Development of Telematics. The Telecom Research and Development Center, they have recently celebrated the 42nd Foundation Day in Delhi campus. This marked the 41 years of the establishment, as it was established in 1984. Next, tell me who has been appointed as the chairperson of the National Medical Commission. Abhijat Sheth, appointed as the chairperson of the National Medical Commission. Next, Ministry of Environment, Forest and Climate Change has finalized the 21-member NDA to launch the carbon market. NDA is your National Designated Authority, right? And this will implement and regulate the India's carbon emission trading system under the Paris Agreement Article 6 framework. This will be taking care that about which companies are creating pollution, right? How much pollution is been coming into the air, right? Because of which company. So all these things will be taken care of, and it will be under the Paris Agreement. Then moving on. Next is banking and finance students. Punjab National Bank has unveiled the first startup centric branch in New Delhi. I repeat, PNB, they opened their first ever startup focused branch that is in alignment with the Startup India initiative that will support the entrepreneurship growth at Bhikaji Kama Palace in New Delhi. Right? So it will be helping the entrepreneurs, startups to fund when required at a nominal rate or as discussed by them. Right? Apart from this, if I ask you who became the first women director general of the Railway Protection Force, Sonali Mishra. Next is ABCDL, that is your Aditya Birla Capital Digital Limited. They have received the in principle payment aggregator license from RBI. Correct? Take a note of this. Who got the payment aggregator, in principle payment aggregator from RBI recently? ABCDL. Then apart from this, tell me students, recently who has been appointed as the CEO of Hindustan Coca-Cola Beverages. So Hemant Rupani has been appointed as the CEO of Hindustan Coca-Cola Beverages. Next, the only Indian on the 2025 Time 100 creators list. Only Indian. Who is she? She is Prajakta Kohli. Next is economy and business students. EY August 2025 report was recently released. EY is your Ernst & Young, right? And here in this report they stated that India projected to become the world's second largest economy in the purchasing power parity terms by 2038. Very important, and it is expected that India's economy will be $34.2 trillion, which is a massive amount of GDP for India, right? And the projection is based on the IMF growth forecast for 2028 to 2030, and it is said that by 2030 the India's GDP is expected to reach $20.7 trillion in terms of purchasing power parity, while the China is projected to remain the largest economy with the terms of a purchasing power parity at $42.2 trillion, right? Take a note of this, students. Now you will be asking, sir, what is this purchasing power parity? See, this PPP or purchasing power parity is the total amount of goods and services that a single unit of a country's currency can buy in another country, right? You must have seen on YouTube's various videos also that it is said that 1 crore salary in USA is equivalent to that of 8 lakh rupees salary, 9-10 lakh rupees salary in India. The same reason is because of the purchasing power parity, because though the person is earning 1 crore there, but still the rent, the food living cost there is extremely high, and it is similar to that what a person can do in 8 lakh rupees or 10 lakh rupees or 15 lakh rupees in India, right? This is just an example. This is example for what purchasing power parity is, right? So in that terms, India will become the world's second largest economy in purchasing power parity terms by 2038, and this report was released by ENY. Apart from this, students, tell me recently, if I ask you that who won British Grand Prix won by Lando Norris, right? Then tell me who became India's 87th Grandmaster. So Hari Krishan became the 87th Grandmaster for India, right? Then National Sugar Cookie Day observed on 9th of July.
World Kishwali Language Day on 7th of July. World Population Day on 11th of July. Next, appointments and resignation students. Akash Tripathi appointed as the Managing Director of SECI. SECI is Solar Energy Corporation of India Limited. Right? He will be succeeding Santosh Kumar Sarangi, the Secretary of MNRE, who had the additional charge of the post following the RP Gupta's exit. So, directly remember it. Next is acquisitions and mergers. CCI has approved on CCI approvals on 27th of August. If we look at the approvals, right, the first is 40% of PSA Bharat investment by PSA India. Then second approval, 100% shareholding of Jayaprakash Associate Limited by Adani Group and 32% stake in the VIP Industries Limited by multiple private equity funds such as your Samvibhag Securities and various individual investors. So these are some your acquisitions that you need to remember here. Then next comes science and technology. So Indian Navy has commissioned the two state-of-the-art stealth frigates, as you can see in the picture, first and second. They are INS Udyagiri and INS Himgiri. INS Udyagiri and INS Himgiri. Right, they have been commissioned at the Eastern Naval Command in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Both of these projects, Udyagiri and Himgiri, they are the variants of the Project 17 Shivalik class frigate. They have been developed by Madgaon Dock Shipbuilders Limited. Right, and here you remember, if we see where they were commissioned, Eastern Naval Command at Visakhapatnam, Andhra Pradesh, INS Udyagiri and Himgiri. Right, this is the second ship from the Project 17A and INS Himgiri, the third ship from the Project 17A. Here you see INS Himgiri built by GRSE and INS Udyagiri built by Madgaon Dock Shipbuilders Limited, and it contains 75% indigenous content. Then tell me, which is the city that launched the India's first digital house address project using the QR code? It is Indore. Next, Israel, they have launched Jupiter space camera on NAOS satellite. Now, what is this NAOS satellite and what is this Jupiter space camera? Right, this NAOS is your National Advanced Optical System satellite, right, and this launch here was done by Israel defense company Elbit Systems Limited. Right, it was done by Elbit Systems Limited and they only developed it, right, and they have launched this Jupiter space camera on this NAOS satellite. It was launched using the Falcon 9 rocket of SpaceX. Right, these satellites, what they will be doing is they will be operating in a 450 kilometer sun synchronous orbit, and this will be basically very beneficial in space based observation. Correct? Take a note of this. With this, large amount of area or a very large area can be covered and high resolution images will be provided. Next is related to sports. Goa has announced as the official host for the FIDE World Cup 2025. So which is the host city for FIDE World Cup 2025? It is Goa, which is scheduled to be held from 30th of October to 27th of November. If we talk about further this, it will be held in Goa. There are 51 to 206 players coming from 90 countries, and here the prize fund is of $2 million. Next, so that's all for the day, students. Now let's move to the revision part. And students, if you find the session interesting and beneficial to you, I want to see maximum likes on this video. On how much percent of the total growth in India's foreign financial asset during FY25 was mainly driven by higher overseas direct investment, currency and deposits and reserve assets as per India's international investment position data released by RBI in June 2025. So on how much percent of the total growth in India's financial asset during was mainly driven by higher overseas investment? It was almost 72%. Right, the data further revealed that the reserve assets alone accounted for over 54% increase in Indian residents' overseas financial assets, followed by currency and deposits and direct investment in properties. Next, on the occasion of the 70th anniversary of the State Bank of India on July 1st, in which two cities did SBI inaugurated their specialized global trade finance centers? It was in Kolkata and Hyderabad. Right, and during the event, SBI has announced a solar rooftop program that will support India's renewable energy transition, and this initiative, it aligns with India's commitment of achieving net zero emissions by 2070. Apart from this, SBI, they have inaugurated a specialized global trade finance center in Kolkata
West Bengal, and Hyderabad, Telangana. These centers they aims to enhance the bank's trade finance capabilities by streamlining the domestic and international trade transactions. Next, identify the insurance company that partnered with AU Small Finance Bank in June 2025 to distribute their life insurance products through the bank's network. So, identify that insurance company. It is Life Insurance Corporation of India. Also, this collaboration supports the national vision of insurance for all by 2047 that was given by IRDAI. Next, in July, IndusInd Bank Limited, they have launched the Indie for Business platform to support which of the following businesses segment in India. It was MSME, right? This newly launched digital platform will offer all banking services across payments, loans, collection, and account insights. Next, mention the organization that subscribed to 1301.25 crore worth of non-convertible debentures issued by Aditya Birla Capital Limited in July 2025 to support renewable energy and e-mobility financing in India. So which is that organization? It is Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, right? And they have issued non-convertible debentures worth 1301.05 crore rupees, 2.05 crore, 1301.25 crore rupees, right? Next, mark the correct statement regarding the report released by RBI's Financial Stability in June 2025. If we look at the option, all these three options are rightly mentioned. Next, how much did International Finance Corporation commit to IndiGrid Trust in July for the development of India's largest 180 megawatt standalone battery energy storage system project in Gujarat? This is 460 crore rupees. This IndiGrid Trust, right? What is this? This IndiGrid Trust is basically a infrastructure investment trust in which you can invest money similar to the process that you can buy stocks and mutual fund, right? And another in one is InvIT and another are REITs, real estate investment trust. Correct. Next, what is the interest rate applicable for RBI's floating rate saving bonds 2020 for the period from July 1st to December 31st, 2025 with interest payable on 1st of January 2026? So what is the interest rate applicable here? The bonds are for 8.05%. Correct. Next, mention the bank that became the first UAE bank to receive in principle approval from International Financial Service Centers Authority to set up the new International Financial Service Center banking unit within GIFT City, Gandhinagar, Gujarat. So mention that bank. Which is that bank we are talking about? Mashrek Bank is the bank that we are talking about. Next, what amount was approved by Green Climate Fund for Asian Development Bank led program that aims to unlock large scale public and private investment in high impact and emerging clean energy sectors in India? It is $200 million. Next, identify the company that received a certificate of registration from SEBI to operate as a stockbroker and clearing member under SEBI stockbroker regulations of 1992. It is Mobivic Securities Broking Private Limited. Next, identify the organization that launched two non-par, non-linked individual plans, that is Navjeevan Shri and Navjeevan Shri Single Premium in July 2025 to cater financial requirements of buyers and various stages of life. So identify the organization. It is Life Insurance Corporation of India. Apart from these two new offerings, LIC has launched the Critical Illness Health Rider, a non-linked individual health rider that can also be integrated to the eligible base plans, right? And it will be catering to the gig economy. Next, which bank signed an agreement with CCIL International Financial Service Centers Limited to enable real-time settlement of USD transaction, that is dollar transactions at GIFT City in Gandhinagar, Gujarat, right? It is Standard Chartered Bank. So it was at the GIFT City that is in Gandhinagar, Gujarat. Next, mention the organization that launched in July the Universal Health Coverage Practitioners and Expert Knowledge Exchange and Resource, a regional peer-to-peer learning network, drive UHC across Asia and the Pacific region. So mention that organization. It is Asian Development Bank, ADB. Next, identify the company that in July unveiled a new index named BSE Insurance Index derived from the constituents of BSE 1000 Index. So identify the company. It is Asia Index Private Limited. The index has a base value of 1000 and this newly launched index is derived from the constituents of BSE 1000 index that are classified under the insurance sector.
Next, mention the bank that partnered with Indigo Airlines to relaunch the co-branded credit card powered by Indigo Blue Chip. So, mention that bank. It is Kotak Mahindra Bank, right? They partnered with Indigo Airlines to relaunch the co-branded credit card powered by Indigo Blue Chips. Next, in July, Computer Age Management Services, that is CAMS, they have launched CAMS Pay Payment Gateway, a next generation platform designed to meet the evolving needs of the businesses in India. Question asked is, CAMS Pay is developed in partnership with whom? It is developed in partnership with MyLaPay. Next, Asian Infrastructure Investment Bank, they committed how much amount to IIFL Home Finance Limited to enhance affordable housing finance access to economically weaker section and low income groups in India. So AIIB, they committed how much amount? It is $100 million. Next, mention the mutual fund company that has launched the BSE Power ETF and BSE Power ETF Fund of Fund in July, exclusively focused on the power sector. So it is Grow Mutual Fund. They have launched this ETF and Fund of Funds. Next, what was the monetary penalty imposed by RBI on HDFC Bank in July for non-compliance with Foreign Exchange Management Act of 1999 regulation related to FDI investment? So, what was the monetary penalty imposed on by RBI on HDFC Bank? It is 4.88 lakh rupees. Next, mention the organization that launched the Venture Capital Fund Settlement Scheme in July to aid the settlement of violations of winding up provisions by migrated VCFs. So, mention that organization. Which is it? It is your SEBI, Securities and Exchange Board of India. Next, identify the financial institution in India that entered into a joint venture with Japan-based Sumitomo Mitsui Financial Group in July to provide wealth management services in Japan. It is SBI Holding Incorporation. Next, RBI issued new directions allowing voluntary pledge of gold and silver as collateral for agriculture and MSMEs. Mention the category of banks to which these new directions are not applicable. It is payment banks. Right, to them it is not applicable. Next is NPCI, National Payment Corporation of India. NPCI, International Payment Limited, is the branch of the international arm of NPCI. Next, students, is your homework question. First question is, tell me, when do we observe Hiroshima Day? Which bomb was dropped on it? Second, Nagasaki Day. Which bomb was dropped on Nagasaki? Third, National Handloom Day. When do we observe it? Fourth, Quit India Movement Day. Which edition of it was observed and when this movement started? Then fifth question, tell me, when do we observe, or tell me, when do we observe the National Sports Day, National Space Day, right, and Javelin Throw Day, National Javelin Throw Day. So these are your important current affairs, students. Stay tuned with us till the end, right? In these videos, right, the daily that we are uploading, I want you to stay tuned till the end, right? Because homework section is there, revision part is there, and the main content is there, which is very beneficial for learning. All the students who are watching this video on daily basis, I tell you that it is very important for you to concentrate on these things, right? Because the content provided here is in very refined way that will be beneficial for you all. So that's all for the day, students. Thank you and have a nice day. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 29 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा और इम्पॉर्टेंट रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे एंड मैनी मोर, तो एंड तक बने रहिएगा। ये जो कंटेंट हम जो वीडियो आपके लिए डेली बेसिस पे लाते हैं, सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं स्टूडेंट्स, एंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंड रिफाइंड वे में हम आपके लिए कंटेंट डेली बेसिस पे लाते हैं। तो इस वीडियो को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो इस वीडियो को सभी के साथ, अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव, नेबर्स सभी के साथ जिनको आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में ग्रो करें एंड उनको नॉलेज मिले एंड अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में वो सक्सेसफुल हो सके। सो शेयर दिस वीडियो विद देम। एंड स्टूडेंट्स, जैसा मैंने बताया, सुबह 5 बजे डेली बेसिस पे हम ये वीडियोस अपलोड करते हैं, तो इनको जरूर देखा करो। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास राणा। We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below.
स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। ये इनका थर्ड टर्म है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ये अभी गुजरात में विजिट पे थे 25 से 26 अगस्त को एंड इन्होंने यहाँ पे कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जैसे रेलवे से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एंड पावर सेक्टर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। रेलवे से बात करें तो 1400 करोड़ की लागत के ये प्रोजेक्ट्स रहेंगे जिसमें से एक है महसाना पालनपुर रेल लाइन जो कि 530 करोड़ की ये प्रोजेक्ट रहेगा, 65 किलोमीटर की ये लाइन रहेगी। इसी के अलावा अगर जैसे हम बात करें पावर प्रोजेक्ट की तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स वर्थ 1000 करोड़ रुपीज इनके द्वारा इनॉग्रेट किए गए अहमदाबाद, महसाना, गांधीनगर में, राइट, जिससे जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं वो बेटर कम होते हुए दिखेंगे एंड इससे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो नेटवर्क का वो और बेटर होता हुआ दिखेगा। इसी के अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज ई विटारा क्या है? ग्रैंड विटारा गाड़ी है, राइट, ग्रैंड विटारा जो कि मारुति सुजुकी है। इसी का अब इलेक्ट्रिक वर्जन यहां पे इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया क्योंकि अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये मार्क करके चलेंगे। फिर इसी के अलावा अगर स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाए, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया जिसमें इंडिया 4th पोजीशन पे स्टैंड करता है इन द वर्ल्ड्स मोस्ट इक्वल सोसाइटीज। फिर अगर मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करूं तो किन दोनों ने कंट्रीज ने इनको ज्वाइन किया भी न्यू डेवलपमेंट बैंक को? कोलंबिया ने एंड उज्बेकिस्तान ने, राइट। फिर मैक्रो हार्ट, ये कंपनी लॉन्च की गई है, एआई कंपनी, किसके द्वारा? इलॉन मस्क के द्वारा। ये आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी रहने वाली है जो एआई की मदद से होगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फिजी के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर सितिवेनी। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये अभी इंडिया के विजिट पे थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनको इन्वाइट करके बुलाया एंड यहाँ पे हमारा जो फोकस रहा दोनों कंट्रीज के बीच में वो था कि इंडिया और फिजी के बीच में हम कैसे रिलेशन को बेटर कर सकें, मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर, ट्रेड फ्लरिश हम कर सकें एंड 10 MOUs यहाँ पे साइन की गए इन वेरियस सेक्टर जैसे हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, सिक्योरिटी सेक्टर, राइट। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर काम किया गया वो है जीरो टॉलरेंस, किससे? टेररिज्म के, राइट। जीरो टॉलरेंस चाहिए हमें टेररिज्म के ऊपर हम खत्म करना चाहते हैं। एक और चीज रही यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वो था ओशन ऑफ पीस। ये क्या था ओशन ऑफ पीस? बेसिकली ये है कि हम पीसफुल, स्टेबल एंड सिक्योर सस्टेनेबल फ्यूचर बना सके पैसिफिक रीजन में। ठीक है, फिर इसी के अलावा अभी किस कंट्री ने या फिर किस कंट्री में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया था? वो है पाकिस्तान में। 25 सालों के बाद इन्होंने यहां पे अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है, राइट। देन किनको अभी नए रॉ चीफ के तौर पे अपॉइंट किया गया है? वो है पराग जैन। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने इंडिया का पहला नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क को लॉन्च किया, बायो E3 चैलेंज। देखो ये फर्स्ट एनिवर्सरी थी यहाँ पे बायो E3 चैलेंज की। बायो E3 सबसे पहले तो ये देख लेते हैं ये है क्या, कि हम बायो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं इन सेक्टर्स जैसे आपका इन इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए, राइट। तो बायो E3 क्या है? बायो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, बायो E3, राइट। यहाँ पे यूथ के लिए स्पेशली यहाँ पे लॉन्च किया गया है। जैसे हम देख रहे हैं एक बायो E3 बायो फाउंड्री नेटवर्क एंड बायो E3 चैलेंज को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, राइट। तो अगर हम इनको देखें चैलेंज और ये नेटवर्क बेसिकली क्या है? नेटवर्क क्या है? 6 इंस्टीट्यूशंस का ये नेटवर्क रहेगा, तो दैट्स नेटवर्क। एंड बायो E3 चैलेंज क्या है? इस चैलेंज की थीम थी डिजाइन माइक्रोब्स, मॉलिक्यूल्स एंड मोर। यहाँ पे क्या है? बेसिकली क्लास 6 से 12 के बच्चे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, वेरियस रिसर्चर्स, फैसिलिटीज, स्टार्टअप्स एंड इंडियन सिटीजन्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जहां पर एम रहेगा बेसिकली क्या? एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है एंड वहां पर इनको उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है जैसे एक हैकाथॉन में होता है। देन जो वो टीम्स उनका सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करेगी, उनको यहाँ पे फंड किया जाएगा, राइट। फर्दर उनको हेल्प किया जाएगा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कैरी आउट करने के लिए। तो ये है आपका बायो E3 चैलेंज, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट। फिर इसी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए जरा बताओ अभी रिसेंटली किनको अपॉइंट किया गया है नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी? सेबी के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है सुनील जयवंत कदाम, ठीक है, टेक अ नोट ऑफ इट। देन इसी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स किन्होंने जीती? वो है लैंडो नॉरिस के द्वारा ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स को जीता गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया रिस्ट्रक्चरिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ PM स्वनिधि स्कीम टिल 31 मार्च 2030। पहले ये आपकी स्कीम जो थी
कब तक थी ये आपकी 31 दिसंबर 2024 थी, लेकिन इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया टिल 31 मार्च 2030। ये स्कीम आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च की गई थी। 1 जून 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। एंड इसका एम क्या था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं हम उनकी हेल्प कर सके, उनको मंथली यहाँ पे हम कुछ अमाउंट प्रोवाइड करा सकें कुछ ट्रांचेस में, ताकि वो अपने जो भी पर्सनल इनकम या फिर जो भी पर्सनल खर्चे हैं वो अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट के ऊपर कर सकें। यहाँ पे जो पहली ट्रांच थी उसको 15,000 रुपये रखा गया, जो कि पहले 10,000 रुपये थी, उसको बढ़ा के 15,000 कर दिया गया। दूसरी ट्रांच जो कि 20,000 थी उसको बढ़ा के 25,000 कर दिया गया, और तीसरी ट्रांच को 50,000 ही यहाँ पे रखा गया है, राइट। एंड ये स्कीम को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें 7,332 करोड़ रुपीस यहाँ पे बजट लॉन्च किया गया, एंड कुछ ऑलमोस्ट 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स को यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा, राइट स्टूडेंट्स। चलिए, अच्छा इसी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए जरा बताओ, अभी रिसेंटली कोड इमरजेंसी एप्लीकेशन लॉन्च की गई वर्ल्ड इमरजेंसी डे के द्वारा, किसके द्वारा लॉन्च की गई? एम्स भोपाल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, राइट। फुल फंक्शनल लिटरेसी किसके द्वारा अचीव की गई थी? गोवा के द्वारा अचीव गई थी। इसके अलावा और भी कईयों के द्वारा अचीव की गई है, वो मुझे आप कमेंट करके बताओ कि किन के द्वारा अचीव की गई है, राइट। देन इसी के अलावा अगर हम बात करें आपसे, अभी रिसेंटली यूको बैंक के सीएफओ कौन अपॉइंट किए गए थे? सुमित खंडेलवाल। नेक्स्ट आ जाते हैं कैबिनेट अप्रूवल्स पे। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने 2 अप्रूवल्स यहां पे लाए हैं, राइट। पहला अप्रूवल है आपका बेसिकली 3 की रेलवे रूट्स का, ये वो 3 के रेलवे रूट्स हैं, 12,328 करोड़ की लागत से यहां पे ये प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट आ जाता है वो है अप्रूवल ऑफ कि हम इंडिया ने बिड किया कि हम 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स को इंडिया में होस्ट करेंगे, एंड इसके लिए होस्ट सिटी कौन सी बताई गई? अहमदाबाद गुजरात इसको सिलेक्ट किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है स्टूडेंट्स, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया ने बिड किया, अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, देयर इज अ फुल चांस कि इंडिया को यहाँ पे होस्ट करने के राइट्स मिल जाए, बट लेट्स सी हाउ दिस प्लेज आउट। देन इसके अलावा बात करूं मैं तो टीवीएस मोटर के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किनको अपॉइंट किया गया? सुदर्शन वेनु को यहाँ पे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है टीसीएस का, राइट। देन इसी के अलावा अभी हमने 17वां एडिशन देखा नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज का। ये नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज किन के बीच में होती है? इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। उलन बतार में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। देन 72nd मिस वर्ल्ड टाइटल किन के द्वारा जीता गया? किनको क्राउन किया गया 72nd मिस वर्ल्ड? तो वो है थाईलैंड की ओपल सुचाता, राइट। इनको क्राउन किया गया मिस वर्ल्ड टाइटल, ये 72nd मिस वर्ल्ड टाइटल था। देन ग्लेन मैक्सवेल ने रिटायरमेंट ले लिया अभी रिसेंटली, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने प्रोजेक्ट आरोहण लॉन्च किया है ताकि जो टोल प्लाजा के एम्प्लॉयज हैं, राइट, उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा सके, उनको हायर एजुकेशन में उनके बच्चों को एनरोल किया जा सके। ये जो स्कीम लॉन्च की गई है प्रोजेक्ट आरोहण, ये आपकी इस साल से लेके अगले साल तक वैलिड रहेगी, राइट। एंड इसके लिए इन्होंने वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के साथ यहाँ पे पार्टनर किया है। जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक ये वैलिड रहेगी। देन क्लास 11 ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को 12,000 रुपए एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को 50,000 रुपए तक का यहाँ पे स्टाइफंड भी देने के काम इनके द्वारा करा जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं DESW, ये है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। इन्होंने एक MOU साइन किया क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ, ताकि जो पेंशन, हेल्थ केयर, रीसेटलमेंट, वेलफेयर सर्विसेज हैं ऑफ उनको बेटर प्रोवाइड कराया जा सके टू द वेटरन्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स, राइट। तो बेटर सर्विसेज के लिए ये यहाँ पे लॉन्च किया गया, ठीक है। देन IPL किन के द्वारा जीता गया था? भी काफी पुराना क्वेश्चन हो गया, बट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के द्वारा यहाँ पर IPL को जीता गया था, राइट। देन इसी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए अभी रिसेंटली अग्निशोध, ये अग्निशोध क्या है? ये एक रिसर्च सेल है। कहां पे लॉन्च किया गया? IIT मद्रास में लॉन्च किया गया, एंड आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे लद्दाख के शयोक विलेज ने अभी पहला बोटानिकल गार्डन डेवलप किया है नियर गलवान वैली, जो 2029 तक यहां पर रेडी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। इन्होंने सेलिब्रेट किया 42nd फाउंडेशन डे इन दिल्ली कैंपस, राइट। 41 ईयर्स को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया।
देन वो कौन सी स्टेट है जिन्होंने, वो पहली स्टेट बनी जिन्होंने अभी एम्पैनल साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को यहाँ पे लाया गया है ताकि जो जुवेनाइल हैं उनको यहाँ पे हेल्प की जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इन्होंने फाइनलाइज किया 21 मेंबर एनडीए को टू लॉन्च द कार्बन मार्केट। आई रिपीट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने फाइनलाइज किया फॉर्मेशन ऑफ अ 21 मेंबर नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो कि चेयर की गई सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू इंप्लीमेंट एंड रेगुलेट इंडिया के कार्बन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम को अंडर पेरिस अग्रीमेंट आर्टिकल 6 फ्रेमवर्क। राइट, तो मार्क करेंगे। इससे क्या होगा, इंडिया में जो कार्बन मार्केट है, बेसिकली जो कंपनीज का पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है उनके ऊपर चेक रखा जाएगा एंड वो जो गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से वो यहाँ पे फर्दर पॉल्यूशन कर सकें, राइट, उसके अंडर कर सकें जिससे एनवायरनमेंट को हार्म ना हो। इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। इसी के अलावा याद रखेंगे 107वां मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कौन बन गया, मोल्डोवा। फिर इसी के अलावा इंडिया 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है इन द वर्ल्ड, ये याद रखेंगे। एंड ऑस्ट्रेलिया ने यूट्यूब बैन कर दिया है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि 16 या फिर सभी बच्चों के लिए जो कि 16 साल से अंडर है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। पंजाब नेशनल बैंक ने अपना पहला स्टार्टअप सेंट्रिक ब्रांच खोला है न्यू दिल्ली में। ये बेसिकली कैटर करेगा स्टार्टअप्स को, राइट, एंटरप्रेन्योर्स को, उनको फंडिंग करने में हेल्प करेगा। एंड ये कहां पर खोला गया है, बीकाजी कामा पैलेस न्यू दिल्ली में। स्टार्टअप्स को ये कैटर करेगा एंड उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है फंडिंग की वो यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखेगा। उनके बैलेंस, उनके अकाउंट्स, राइट, उनके स्टेटमेंट्स वगैरह को भी ये अकाउंट्स को ये हैंडल करते हुए दिखेंगे। ठीक है, चलिए, आरबीआई ने जो रेपो रेट है अनचेंज रखा, कितना है अभी, 5.5% का है। नेक्स्ट ABCDL जो कि है आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल लिमिटेड, इनको इन प्रिंसिपल पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल गया आरबीआई से। ये पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है कि ये पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं थ्रू मर्चेंट्स एंड उनको पेमेंट फर्दर सेंड कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, देन इसी के अलावा डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं शस्त्र सीमा बल के, वो है संजय सिंघल। देन एको के ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट किए गए हैं, महेंद्र सिंह धोनी। देन किनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो है जनरल पुष्पेंद्र सिंह। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। EY अर्नस्ट एंड यंग की अगस्त रिपोर्ट रिलीज की गई जहां पे ये बता रहे हैं कि इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ द परचेजिंग पावर पैरिटी बाय 2038। काफी इंपॉर्टेंट डाटा आया है स्टूडेंट्स ये सामने। एंड ये परचेजिंग पावर पैरिटी सबसे पहले ये समझते हैं वो क्या है, पहले एक चीज और देख लेते हैं। एंड इंडिया की जो जीडीपी है, एस्टिमेटेड जीडीपी 34.2 ट्रिलियन डॉलर रहेगी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। ये क्या बताता है परचेजिंग पावर पैरिटी, कि किसी कंट्री, कोई कंट्री कितनी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकती है विद अ सिंगल यूनिट ऑफ द कंट्रीज करेंसी इन अनदर कंट्री। ठीक है, ये परचेजिंग पावर पैरिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में एक गुड हम अगर लेस बाय करें 20 रुपए का है, वही यूएस से जाके बाय करें तो 120 रुपए का है। इंडिया में बोला जाता है कि बाहर लोगों को 1 करोड़ की सैलरी लग गई, राइट, लेकिन इंडिया में अगर हम वो देखें तो 10 से 15 लाख की सैलरी वाला भी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पैरिटी ये बिल्कुल सेम हो जाते हैं, क्योंकि बाहर अगर यूएसए में देखें तो बहुत खर्चे हैं, उनका रेंट भी उस हिसाब से होता है, खाना भी उस हिसाब से होता है, उनका लाइफस्टाइल भी फिर उस हिसाब से खर्चे होते हैं। करेक्ट, तो परचेजिंग पावर पैरिटी होता है। तो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी 2038 तक। एंड टॉप पर कौन सी रहेगी, फर्स्ट रहेगी चाइना। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर। आकाश त्रिपाठी इनको अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SCCI सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ये नए मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं आकाश त्रिपाठी। संतोष कुमार सारंगी को ये सक्सीड करेंगे। इसी के अलावा अगर आपसे पूछा जाए हेड कोच कौन अपॉइंट किया गया है इंडिया की मेन फुटबॉल टीम का, खालिद जामिल। ठीक है, इसी के अलावा कौन अपॉइंट किए गए हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मन्नपुरम फाइनेंस, वो है दीपक रेड्डी। देन किनको अपॉइंट किया गया एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडसइंड बैंक, कौन है वो, राजीव आनंद। एंड 3 साल के लिए इनको यहां पे अपॉइंट किया गया है। देन PB बालाजी ये अपॉइंट किए गए हैं एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जगुआर लैंड रोवर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है एक्विजिशंस एंड मर्जर्स पर। एक्विजिशंस देखते हैं, 3 एक्विजिशंस यहां पे याद रखेंगे। PSA भारतीय इन्वेस्टमेंट के 40% एक्वायर करेंगे, कौन, PSA इंडिया, राइट, इनको अब 100% ओनरशिप अचीव्ड हो गई है इसकी। देन सेकंड है 100% शेयर होल्डिंग ऑफ जयप्रकाश एसोसिएटेड, ये कौन बाय कर रहा है, अदानी ग्रुप। तीसरा आ जाता है 32% स्टेक इन द VIP इंडस्ट्रीज लिमिटेड बाय मल्टीपल प्राइवेट इक्विटी फंड्स के द्वारा।
चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी इंडियन नेवी ने कमीशन किए सेकंड एंड थर्ड शिप्स ऑफ आपके प्रोजेक्ट 17 ने। एक है आईएनएस उदयगिरी एंड दूसरा है आईएनएस हिमगिरी। राइट यहीं पे एक चीज याद रखेंगे, जो आईएनएस हिमगिरी है इसको जीआरएससी के द्वारा बनाया गया है, दैट इज गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, एंड आईएनएस उदयगिरी को एमडीएल जो कि है मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इन दोनों को डिलीवर किया गया कहां पे, कमीशन किया गया कहां पे, ईस्टर्न नेवल कमांड एट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। एंड आईएनएस उदयगिरी ये सेकंड शिप है फ्रॉम प्रोजेक्ट 17 है, एंड आईएनएस हिमगिरी ये थर्ड शिप है फ्रॉम प्रोजेक्ट 17 ए। नेक्स्ट आ जाते हैं इजराइल, इनके द्वारा जुपिटर स्पेस कैमरा को लॉन्च किया गया ऑन एनएओएस सैटेलाइट। देखो ये जो कैमरा रहेगा ना, हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, वाइड एरिया की एक पिक्चर्स ले सकता है, सर्वेलेंस में बहुत बेनिफिशियल रहेगा, साइंटिफिक अर्थ ऑब्जर्वेशन, इन्वायरमेंटल, मिलिट्री के लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया था। एनएओएस क्या होता है, यह है नेशनल एडवांस ऑप्टिकल सिस्टम सैटेलाइट, राइट। एंड कहां से लॉन्च किया गया इसको, फ्रॉम वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया यूएसए से इसको लॉन्च किया गया। राइट स्टूडेंट्स, फिर आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। गोवा ने अनाउंस किया कि वो ऑफिशियल होस्ट हैं फॉर फाइड वर्ल्ड कप 2025 के, जो कि 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक हमें देखने को मिलेगा। राइट तो गोवा होस्ट है, 30 अक्टूबर से 27 नवंबर ये इवेंट होगा। 90 कंट्री से यहाँ पे प्लेयर्स पार्टिसिपेट करने हमें देखने को मिलेंगे। यह है फाइड वर्ल्ड कप 2025। राइट स्टूडेंट्स, इसी के अलावा सिम्बैक एक्सरसाइज, कौन सा एडिशन हुआ सिम्बैक्स एक्सरसाइज का, 32nd एडिशन था, जिसमें आईएनएस सतपुरा का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला। इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। देन 8वें कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हमें देखने को मिले, 2027 में होंगे। कौन होस्ट करेगा, माल्टा होस्ट करेगा 8वां एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 के। राइट सो दोस्तों, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो आपकी लर्निंग में काफी बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट मेंशन द बैंक दैट बिकेम द फर्स्ट यूएई बैंक जिन्होंने रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम आईएफएससीए टू सेट अप अ न्यू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बैंकिंग यूनिट विद इन गिफ्ट सिटी गुजरात में। तो कौन सा वो बैंक है, पहला बैंक बना यूएई का जिन्होंने अपना यहाँ पे सेटअप किया है, वो है माशरेक बैंक। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट अमाउंट वाज अप्रूव्ड बाय ग्रीन क्लाइमेट फंड फॉर एशिया डेवलपमेंट बैंक लेड प्रोग्राम, जो एम करता है टू अनलॉक लार्ज स्केल पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन हाई इंपैक्ट एंड इमर्जिंग क्लीन एनर्जी सेक्टर्स इन इंडिया। तो कितना अमाउंट अप्रूव किया गया था, $200 मिलियन यहाँ पे अप्रूव किए गए थे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिसने रिसीव किया एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी टू ऑपरेट एज अ स्टॉक ब्रोकर एंड क्लियरिंग मेंबर अंडर सेबी स्टॉक ब्रोकर्स रेगुलेशन ऑफ 1992। तो आइडेंटिफाई द कंपनी, वो है मोबीक्विक सिक्योरिटीज ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसने लॉन्च किया 2 नॉन पार नॉन लिंक्ड इंडिविजुअल प्लान्स, नवजीवन श्री एंड नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम को इन जुलाई टू केटर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बायर्स एट वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो कौन सा है, वो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, किस बैंक ने साइन किया एक अग्रीमेंट CCIL इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के साथ ताकि एनेबल किया जा सके रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ डॉलर्स ट्रांजैक्शंस एट गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात। तो कौन सा बैंक है जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है यहाँ पर, वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। CCIL इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया गया। नेक्स्ट है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने लॉन्च किया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट नॉलेज एक्सचेंज को एंड रिसोर्स को, जो कि एक रीजनल पीयर टू पीयर P2P लर्निंग नेटवर्क है टू ड्राइव UHC यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अक्रॉस एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ, कौन सी है वो ऑर्गेनाइजेशन, वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने जुलाई के महीने में अनवेल किया एक नया इंडेक्स जिसका नाम है BSE इंश्योरेंस इंडेक्स, जो कि ड्राइव कर देता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फ्रॉम BSE 1000 इंडेक्स। तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया, एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, मेंशन द बैंक जिन्होंने पार्टनर किया विद इंडिगो एयरलाइंस के साथ टू रीलॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पावर्ड बाय इंडिगो ब्लू चिप्स, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड कैम्स, इन्होंने कैम्स पे पेमेंट गेटवे लॉन्च किया, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म है डिजाइन टू मीट द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ द बिजनेसेस इन इंडिया। कैम्स पे इसको डेवलप किया गया इन पार्टनरशिप विद किसके साथ, माइला पे के साथ, ताकि सिक्योरिटी के ऊपर काम किया जा सके।
नेक्स्ट, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्होंने कमिट किया कितना अमाउंट टू आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड, ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग को ग्रोथ मिल सके, ईडब्ल्यूएस एंड लोअर इनकम ग्रुप्स को इंडिया में फंक्शनिंग यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड की जा सके। तो $100 मिलियन का यहाँ पे कमिट किया गया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा टू आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड। नेक्स्ट, मेंशन द म्यूचुअल फंड कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया बीएससी पावर ईटीएफ एंड बीएससी पावर ईटीएफ फंड ऑफ फंड को, जो कि स्पेसिफिकली फोकस करेगा पावर सेक्टर के ऊपर। तो ग्रो म्यूचुअल फंड के द्वारा ये ईटीएफ एंड फंड ऑफ फंड यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मॉनेटरी पेनल्टी जो इंपोज की गई आरबीआई के द्वारा ऑन एचडीएफसी बैंक विद नॉन कंप्लायंस फ्रॉम द फेमा 1999 रेगुलेशंस, जो थी एफडीआई से रिलेटेड। तो कितनी पेनल्टी इंपोज की गई एचडीएफसी पे? 4.88 लाख रुपीस की पेनल्टी इंपोज की गई। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने वेंचर कैपिटल फंड सेटलमेंट स्कीम 2025 को लॉन्च किया जुलाई के महीने में, जो एड करता है सेटलमेंट वायलेशंस को ऑफ वाइंडिंग अप प्रोविजंस बाय माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड्स। तो मेंशन दैट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? वो है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया जो एंटर करते हैं इनटू अ जॉइंट वेंचर विद जापान बेस्ड सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप इन जुलाई, जो प्रोवाइड करता है वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज को इन जापान। ये है एसबीआई होल्डिंग इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट, आरबीआई ने इशू की नई डायरेक्शंस जो अलाउ करता है वॉलंटरी प्लेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एज कोलेटरल फॉर एग्रीकल्चर एमएसएमई लोन। मेंशन द कैटेगरी ऑफ बैंक्स टू विच दीज न्यू डायरेक्शंस आर नॉट एप्लीकेबल। तो ये जो नई डायरेक्शंस है ये किस पे एप्लीकेबल नहीं है? तो ये पेमेंट बैंक्स पे एप्लीकेबल नहीं रहेंगी। फिर आ जाते हैं एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जो कि है एनआईपीएल। इन्होंने अनाउंस किया एडिशन ऑफ 13 नए एडिशनल इंडियन बैंक्स को इनटू द यूपीआई पे नाउ सर्विस, जो कि एक जॉइंट इनिशिएटिव है बिटवीन आरबीआई एंड। Next, students, is your homework question. First question is, tell me, when do we observe Hiroshima Day? Which bomb was dropped on it? Second, Nagasaki Day. Which bomb was dropped on Nagasaki? Third, National Handloom Day. When do we observe it? Fourth, Quit India Movement Day. Which edition of it was observed and when this movement started? Then, fifth question, tell me, when do we observe, or tell me, when do we observe the National Sports Day, National Space Day, right, and Javelin Throw Day, National Javelin Throw Day. So these are your important current affairs, students. Stay tuned with us till the end, right? In these videos, right, the daily that we are uploading, I want you to stay tuned till the end, right? Because homework section is there, revision part is there, and the main content is there, which is very beneficial for learning. All the students who are watching this video on daily basis, I tell you that it is very important for you to concentrate on these things, right? Because the content provided here is in very refined way that will be beneficial for you all. So that's all for the day, students. Thank you and have a nice day.